आज हम लोग एनसीईआरटी के पेज नंबर 17 को डिस्कस करेंगे, जिसमें कि फंजाई के रिप्रोडक्शन से रिलेटेड फैक्ट्स होंगे। कि फंजाई में रिप्रोडक्शन कितने टाइप से होते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि फंजाई में तीनों टाइप से रिप्रोडक्शन होता है, जो कि वेजिटेटिव प्रोसेस से भी होता है, दूसरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है और इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। जिसमें कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जनरली फ्रेगमेंटेशन, फिजन और बर्डिंग के थ्रू होता है। वहीं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर्स के थ्रू होता है, और ये स्पोर्स जो इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू बनते हैं उन्हें कोनिडिया कहा जाता है, या इन्हें स्पोरेंजियोस्पोर्स या जूस्पोर्स, ये तीनों नाम से ये जाने जाते हैं। वहीं इनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो स्पोर्स, एस्कोस्पोर्स और बेसिडियोस्पोर्स के थ्रू होता है। इसमें जो वेरियस टाइप के स्पोर्स बनते हैं, जो कि डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर के होते हैं, जो कि फ्रूटिंग बॉडी फॉर्म करते हैं। और जो ये सेक्सुअल साइकिल होता है, ये 3 स्टेप्स को फॉलो करता है, उसके बाद इनका सेक्सुअल साइकिल पूरा होता है। जिसमें कि 3 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं: प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और मियोसिस। प्लाज्मोगेमी वो प्रोसेस है जिसमें कि प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन होता है। इसे हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन द 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट्स, which is called the plasmogamy। वहीं कैरियोगेमी में 2 न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है, दैट इज द फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई कॉल्ड द कैरियोगेमी। और थर्ड प्रोसेस जो फाइनल स्टेप सेक्सुअल साइकिल का है वो है मियोसिस, जिसमें कि जाइगोट का फॉर्मेशन होता है और उसके बाद हैप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन हो जाता है। जनरली फंगस जो होते हैं वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, जिसमें कि 2 हैप्लॉइड हाइफी, जो कंपेटेबल हाइफी होते हैं, वो मेटिंग के थ्रू एक दूसरे के करीब आते हैं और फ्यूज करते हैं। वहीं कुछ फंजाई जिसमें कि 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियर इमीडिएटली फ्यूज करके डिप्लॉइड सेल्स बनाते हैं। जबकि कुछ फंजाई ऐसे हैं जैसे कि एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज, जिसमें कि डाइकैरियोटिक स्टेज पाया जाता है, दैट इज N+N स्टेज, यानी 2 न्यूक्लियाई पर सेल occurs in a such condition that is called the dikaryon and the phase is called the dikaryophase। अगर हम इनके मॉर्फोलॉजी, माइसीलियम के मॉर्फोलॉजी, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन और फ्रूटिंग बॉडीज के बेस पर देखें तो इस किंगडम का डिवीजन डिफरेंट क्लासेस में किया जा सकता है, और इनके फंजाई के 4 क्लास में डिवाइड किया गया है, जो कि है फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और डिटेरोमाइसिटीज। जैसा कि एनसीईआरटी के पेज नंबर 17 में हम लोग फाइकोमाइसिटीज और एस्कोमाइसिटीज के बारे में जानेंगे कि फाइकोमाइसिटीज से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी है जो कि इंपॉर्टेंट फैक्ट देते हैं, जिसके बेस पे नीट के एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। जैसा कि फाइकोमाइसिटीज में हम लोग जानते हैं कि इनके माइसीलियम जो होते हैं वो एसेप्टेट होते हैं, और न्यूक्लियस जो होते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, जो कि सिनोसिटिक फॉर्म में पाए जाते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो इसमें होता है फाइकोमाइसिटीज में, जो कि अगर मोटाइल फॉर्म में रहेगा तो वो जूस्पोर्स के थ्रू होंगे, वहीं अगर नॉन मोटाइल फॉर्म में होता है तो वो एप्लेनोस्पोर्स के थ्रू होते हैं। इनमें 2 तरह के गैमेट्स बनते हैं। अगर मॉर्फोलॉजी में ये सिमिलर होंगे तो ये आइसोगैमस टाइप के होंगे, और अगर मॉर्फोलॉजी इनका डिसिमिलर होगा तो ये एनाइसोगैमस होंगे, या इन्हें ऊगैमस के नाम से भी जाना जाता है। इसके कॉमन एग्जाम्पल हैं म्यूकर, राइजोपस और एल्ब्यूगा। म्यूकर जो है वो फाइकोमाइसिटीज का बेस्ट एग्जांपल है। वहीं राइजोपस जो है वो ब्रेड पे जो अर्लियर स्टेज में जो फंगल ग्रो करते हैं वो राइजोपस होते हैं। वही मस्टर्ड के प्लांट पर जो पैरासिटिक फॉर्म में फंजाई पाए जाते हैं वो होते हैं एल्ब्यूगो। दूसरा इसका क्लास है एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज जो होते हैं वो सैक लाइक फंजाई होते हैं, और ये मोस्टली जो मल्टीसेलुलर ही होते हैं, जो जिनका इसका एग्जांपल पेनिसिलियम है, और रेयरली यूनिसेलुलर होते हैं, जिसका कि एग्जांपल यीस्ट है, जिन्हें सैक्रोमाइसिस भी कहा जाता है। ये सेप्रोफाइटिक भी होते हैं, डिकम्पोजर्स भी होते हैं, पैरासिटिक भी होते हैं, और कॉप्रोफिलस भी होते हैं। जो डंग पे ग्रो करते हैं उन्हें कॉप्रोफिलस कहा जाता है। तो ओवरऑल पेज नंबर 17 में 11th बायो के एनसीईआरटी के पेज नंबर 17 का जो फैक्ट निकल के आया उस पे बेस्ट कुछ क्वेश्चंस हैं, जिसको कि हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। लगभग 7 क्वेश्चन इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिनकी नीट में आने की संभावनाएं हैं, उसे हम 1 by 1 डिस्कस करेंगे। Let's start the first question. The question is, which of the following is the correct sequence in the sexual reproduction of fungi? The choice is A, plasmogamy, then karyogamy, then meiosis. Choice number B is meiosis, then plasmogamy, then karyogamy. Choice number C is karyogamy, then meiosis, then plasmogamy. And the choice number D is plasmogamy, then meiosis, then karyogamy. As we all know that the sexual reproduction in the fungi follows the 3 sequential distinctive steps. First is plasmogamy, then karyogamy, then meiosis. That is, in the stage of the plasmogamy, the protoplasm, that is cytoplasm of the 2 motile or non-motile gamete fuse together. In karyogamy, in the second step, the 2 haploid nuclei within the fused cytoplasm fuse to form a diploid nuclei, that is 2N.
And the third step, that is the meiosis, the diploid zygote undergoes the meiotic division to return to the haploid state, producing the haploid spores. So it means that the sequence in the sexual reproduction of the fungi takes place by these three steps, that is the plasmogamy, then karyogamy, then meiosis, and it is present in the option number A. So the answer will be A, plasmogamy, then karyogamy, then meiosis. Let's proceed to the second question, that is dikaryophase in the fungi refers to the stage where option number A, two nuclei fuse to form a diploid zygote, option number B, two nuclei coexist in a single cell without fusing, and the option number C is haploid spores are formed by meiosis, and the option number D is gametes are formed by mitosis. As we all know that in the higher fungi like Ascomycetes and Basidiomycetes, the fusion of the two haploid cells does not immediately leads to the nuclear fusion. Instead, the intervening stages called the dikaryophase occurs where two distinct compatible nuclei, that is N plus N, share the same cellular environment before undergoing karyogamy. It means that two nuclei coexist in a single cell without fusing, that is present in the option number B. So the answer will be option number B. Let's proceed to the question number 3, that is question is which fungal class includes the rhizopus and mucor, option A Basidiomycetes, option B Ascomycetes, option C Phycomycetes, and the option D is Deuteromycetes. As we know that the member of the Phycomycetes are lower primitive fungi usually found in the aquatic habitat or the moist damp places. Common example includes rhizopus, a typical black bread mold, mucor and albigo, the parasitic fungus present in the mustard. So the rhizopus and the mucor is the best example for the Phycomycetes, that is present in the option number C. Thus the answer will be the choice number C, that is Phycomycetes, option C. Let's proceed to the question number 4, that is the asexual spores in mucor are known as option A zoospores, option B aplanospores, option C conidia, and the option D is ascospores. As we previously discussed that the mucor reproduces asexually by producing the non-motile thin walled spores inside a structures called the sporangium. These non-motile asexual spores are specifically called the aplanospores. If they were motile, they would be called the zoospores. But in this question, the answer will be the non-motile asexual spores, that is aplanospores, which is present in the option number B. So the answer will be B, aplanospores. Let's proceed to the question number 5, that is belongs to the assertion and reasoning. The assertion is mycelium is the Phycomycetes is aseptate and cynocytic, and the reason is Phycomycetes reproduces only by the sexual method. As we know that the hyphae in the Phycomycetes lack cross walls, that is septa, and contain the multiple nuclei suspended in continuous cytoplasm, making them aseptate and cynocytic. So the assertion is the correct statement. And in the reason, Phycomycetes reproduce extensively via the asexual method using both motile zoospores and the non-motile aplanospores in addition to the sexual reproduction. So the reason is incorrect. So as per choice, we can say that the assertion is true, but the reason is the wrong, which is present in the option number C. That is, as we say that the answer is C, that is assertion is true and the reason is false. Now let's proceed to the question number 6, that is a matching type question, column 1 and column 2. Column 1 plasmogamy, second option karyogamy, third option meiosis, and the fourth option is dikaryophase. And the column 2 is, the first option is fusion of protoplast, second formation of haploid spores, third fusion of nuclei, and the fourth one is two nuclei. By matching the each process with its direct biological definition, the plasmogamy represents the initial cytoplasmic merge, that is protoplast fusion, and the karyogamy specifically defines the fusion of the pairs of the nuclei, and the meiosis reduce the chromosome count resulting in the haploid reproductive spores, and the dikaryophase, that is denotes the cellular phase holding the two unfused nuclei in the form of N plus N. So this
choice will be present in option number B, that is A with first plasmogamy, fusion of protoplast, option B karyogamy, fusion of nuclei, that is present in the option number 3, and third is meiosis, that is formation of the haploid spores, present in the option number 2, and last one is dikaryophase, that is 2 nuclei per cell stage. So the answer will be option number B. Let's proceed to the question number 7th, that is statement based. Which of the following statement is correct about the phycomycetes? Statement number 1, aquatic habitat. Statement number 2, mycelium is septate. Statement number 3 is asexual reproduction by the zoospores or aplanospores, and the statement number 4 is example includes the rhizopus and albugo. Statement 1, 3 and 4 are factual. Characteristics of phycomycetes. Statement 2 is incorrect because the mycelium characteristics of this fungal group is aseptate, that is lacking of partition wall rather than the septate. So the answer will be 1, 3, 4 is the correct, which is present in the option number C, so that the C is the correct answer.